है और चौकोनी है with square faces, of course. और चौकोनी चेहरे हैं वहाँ पर They have beautiful bodies made of light. और उनका शरीर बहुत ही सुंदर है और प्रकाश से बना हुआ They live for 1,000 years. और 1000 साल तक वो जीते हैं। There's no fighting, food grows naturally. और वहाँ पर कोई झगड़ा नहीं है, जो अनाज है वो अपने आप उगता है। As soon as you're born, everything you need is given to you. जैसे ही आपका जन्म होता है तो जो भी आपको लगता है वो आपको दिया जाता है। So because there's no trouble there, there's very little motive to practice the Dhamma. और कोई भी कठिनाई नहीं होने के कारण यहाँ पर फिर धम्म जीवन जीने के लिए बहुत ही कम ऐसी प्रेरणा होती है। They're unaware of death. और वे मृत्यु के प्रति अजागरूक होते हैं। But 7 days before they die, they hear a voice whispering to them, "You're going to die." और 7 दिन मृत्यु के पहले 7 दिन एक प्रकार से वो उनके कान में कोई आवाज सा सुनते हैं जहाँ पर उनको कहा जाता है कि आप मरने वाले हो। It's too late then. लेकिन ये बहुत देर हो चुकी होती है। Even though you can gain enlightenment in a single day, it's not at all easy. तो ऐसा कहा जाता है कि एक दिन में भी आपको बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये बात इतनी सहज नहीं है। So what's the point? तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? You know, we can't take this geographically, yeah? तो इसको हम भूगोल शास्त्र के जैसा नहीं ले सकते, भौगोलिक नहीं ले सकते। Presumably what is being communicated to us is the special character of the world we inhabit. तो एक प्रकार से जिस विश्व में या जिस जगत में हम रहते हैं उसकी विशेषता को ही ये दर्शाता है। Because in our world there's a balance of pain and pleasure. क्योंकि हमारे जगत में एक प्रकार से दुख और आनंद का संतुलन है। And the suggestion is that it's because of the unsatisfactory nature of things that you begin to reflect on life. क्योंकि चीजों के बारे में जो असंतुष्टि या असमाधान होता है उसी के कारण फिर आप जीवन के ऊपर सोचना शुरू करते हो। It may not be your own suffering, of course. शायद ये आपका स्वयं का दुख नहीं होगा। You can be completely happy yourself. शायद आप पूरी तरह से स्वयं आनंदी होंगे। But you can be aware of the suffering around you. लेकिन आपके इर्द गिर्द जो दुख है उसके प्रति आप सजग होंगे। And that makes you realize that this conditioned existence is inherently unsatisfactory. और उससे फिर आपको ये बात पता चलती होगी कि ये जो संस्कारित जगत है वो अपने आप में is unsatisfactory, वो असंतुष्ट है या असमाधानी ऐसा विश्व है। That's the way it is. वो इसी प्रकार से है। There's always suffering. हमेशा ही दुख वहाँ पर है। If there's not the immediate suffering during life, there's the suffering that comes as you die. अगर तुरंत ही आपके जीवन में दुख नहीं है तो धीरे धीरे जैसे आप मृत्यु के करीब जाते हो वैसे दुख आता है। Now, how true is all this? लेकिन ये कितना सत्य है? One can take this too far. कभी-कभी हम ये इसको बहुत दूर तक लेके जा सकते हैं। I think that, as I say, what's mainly being communicated to us is the special opportunities we have in this particular existence. लेकिन जैसे मैं इसको देखता हूँ कि एक प्रकार से हमें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि हमें कितना महत्वपूर्ण ऐसा अवसर है यहीं पर या इसी जगत में। Traditionally they'd say, well, you could have been born on any other of these other continents. पारंपरिक दृष्टि से ऐसा कहा जाता है कि शायद आपका जन्म और दूसरे महाद्वीपों में भी हो सकता था। And then, well, you'd have no stimulus to practice. लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर धम्म जीने के लिए आपके पास कोई भी उत्तेजना या प्रेरणा नहीं होती। So this suggests that we should be very, very careful of this life that we've got. और इसलिए ये बात हमको ये दर्शाती है कि इस जीवन के बारे में हमने सही में बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए। You remember the 4 mind turnings. आपको पता है कि 4 मन के जो प्रशिक्षण है that we reflect on the preciousness of this human existence. और इस मनुष्य के अस्तित्व का कितना मूल्य है, मूल्यवान है वो बात, इसकी
इसके ऊपर हम चिंतन करते हैं। So I would say don't worry too much about the contents of these continents. Yeah. तो ये जो द्वीप है उनके संदर्भ में जो बात कही गई है उसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो। I can't say that when I do the mandala practice I make sure I've got each of them there and I reflect on what's going on there. तो जब मैं स्वयं मंडला अर्पण का अभ्यास करता हूँ तो मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचता कि हर एक कहाँ पर है और क्या हो रहा है। The only thing I think to reflect on is that we are on Jambudvipa. तो महत्वपूर्ण बात में जो विचार करता हूँ वो ये है कि हम जो है वो जम्बूद्वीप में हैं। We inhabit a human realm in which there's a balance of pain and pleasure. तो हम एक प्रकार से मनुष्य लोक में है जहाँ पर दुख और सुख का संतुलन है। And that stimulates us to practice the Dhamma. और यही बात फिर हमें उत्तेजित करती है धम्म का आचरण करने के लिए। I think that the issue is a bit more complicated than it's presented generally. तो ये जो विषय है या ये जो मुद्दा है जिस प्रकार से रखा जाता है उससे कहीं अधिक जटिल है। You could say, what is it that leads us to reflect on our lives? तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो हमें हमारे जीवन के ऊपर चिंतन करने के लिए बाध्य करेगी? Well, we have the capacity to think. और ये बात इसलिए है क्योंकि हमारे पास विचार करने की या चिंतन करने की क्षमता है। Why do we have the capacity to think? लेकिन हमारे पास विचार करने की क्षमता क्यों है? Well, you could say that if we were just animals, we wouldn't be able to think. We would just be reacting instinctively. अगर हम प्राणी होते तो हम विचार कर नहीं सकते थे, हम केवल अंतर्स्फूर्ति से केवल प्रतिक्रिया दिया करते थे। But because we can think about the past and we can think about the future. तो हम विचार करने की क्षमता के कारण हम हमारे भूतकाल के बारे में विचार कर सकते हैं और भविष्य के बारे में विचार कर सकते हैं। We can sit here and think about doing a practice that we've never done before. तो हम यहाँ पर बैठकर ऐसे अभ्यास के बारे में विचार कर सकते हैं जो अभ्यास इसके पहले हमने कभी नहीं किया। Because we believe it will help us to gain something in the future. क्योंकि हम इसके ऊपर विश्वास करते हैं कि ये ऐसी बात हमको भविष्य में मिला के दे सकता है, इसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। So the key factor is the ability to reflect. तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर यह है कि हमारी जो क्षमता है चिंतन करने की वो। So effectively in these other realms there's no reflection. तो परिणामकारक रूप से और जो द्वीप है या और जो लोक है वहाँ पर चिंतन की क्षमता नहीं है। If they're really living a kind of animal existence. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्राणियों जैसे अस्तित्व वो जी रहे हैं। Where everything works fine except when you die. सब कुछ तब तक अच्छा चलता है जब तक आप मृत्यु नहीं होते। But because we've developed this faculty of reflection, well, we can think about ourselves being different in the future. और ये विचार करने का जो इंद्रिय है हमने विकसित किया है, इसलिए हम स्वयं को भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। That's why it's so important we understand what we're doing. और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये समझना कि हम क्या कर रहे हैं। When we were in Ladakh, Sadhana Ratna and I met with the president of the Ladakh Gompa Association. तो जब हम लद्दाख में थे तब साधना रत्न और मैं ऐसे अध्यक्ष को मिले जो लद्दाख के गोम्पा मतलब बिहार के अध्यक्ष थे। He was a young monk, very very bright. युवा भिक्षु थे, वो बहुत ही तेजस्वी थे। And I asked him what he was doing as president of the Gompa Association of the monasteries. Yeah. तो मैंने फिर उनको कहा कि एक बिहार के अध्यक्ष होने के नाते वो क्या कर रहे हैं? He said he was working to make sure the monks and especially the young monks were educated. तो उन्होंने कहा कि मैं ये कर रहा हूँ कि जो भी युवा भिक्षु है खासकर वो शिक्षित हो, इस बात के ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूँ। Yes, Sadhana Ratna and Rutayas were there. They met too. Yeah. भी वहाँ पर थे वो। And so I said to him, I already knew the situation. हाँ, तो मैंने उनको कहा कि मुझे पता है यहाँ की स्थिति। He said, they just know how to recite puja, don't they? Yeah. और उन्होंने कहा कि मैंने कहा उनको कि उन लोगों को केवल पूजा कैसी बोलनी है यही आता है ना। They don't know what it means. उनको ये भी पता नहीं कि उसका अर्थ क्या है। They go really well, yeah.
तो इस तरह से वो बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। But they have no idea what they're saying. Yeah? तो लेकिन वो क्या बोल रहे हैं उनको कोई कल्पना नहीं होती। Well, we know another religion like that, don't we? हमको पता है कि दूसरा भी एक धर्म इस प्रकार का है। So he said that, of course, young educated Ladakis, they can't connect with this. Yeah? तो उन्होंने कहा कि जो युवा शिक्षित ऐसे लड़ाकी है वो लोग इसके साथ अपना संबंध देख नहीं पाते, रख नहीं पाते। So he asked for our help. और इसलिए उन्होंने हमें मदद के लिए पूछा। And that they would welcome some of us to go and educate young monks, and I'm trying to make the same approach to nuns too. तो निश्चित रूप से वो चाहेंगे, हमारा स्वागत ही करेंगे कि अगर हम वहाँ पर जाते हैं और उनके युवा भिक्षुओं को सिखाते हैं और भिक्षुणियों को भी सिखाते हैं तो because if you don't reflect on what you're doing, it just has a positive effect on you, but it cannot transform you. अगर जो भी आप कर रहे हो अगर उसके ऊपर आप विचार नहीं करते तो निश्चित रूप से जो भी आप कर रहे हो उसका सकारात्मक परिणाम आपके ऊपर होगा, लेकिन वो आपको परिवर्तित नहीं करेगा। So that they need to be educated so that they understand the meaning of what they're doing. और इसलिए वो जो है वो शिक्षित होना जरूरी है ताकि जो भी वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं उनको पता चले। I've given you already far more than most Tibetans will know. तो मैंने इतना कुछ आपको दिया है कि एक जो तिब्बतन है, ज़्यादा से ज़्यादा जो तिब्बतन लोग हैं उनको भी जो पता नहीं है उतना मैंने आपको दिया है। They'll know what it all looks like. उनको पता है कि ये किस तरह से दिख सकता है। They'll know what shape the faces are and how long they live. उनको ये भी पता है कि वहाँ हर एक जगह पे जो लोग हैं उनके चेहरे किस आकार के हैं और कितने लंबे समय तक वो जीते। But they won't have any basis for making a deeper connection. लेकिन उस बात के साथ गहराई से संबंध जोड़ने के लिए उनके पास कोई भी आधार नहीं है। Aren't you fortunate, brothers and sisters? आप बहुत भाग्यशाली हैं बहनों और भाइयों। Aren't we fortunate? We have a teacher who's taught us to think about the Dhamma. हमें ऐसे गुरु मिले हैं, शिक्षक मिले हैं कि जिन्होंने धम्म के बारे में विचार करना सिखाया है। So yes, it's important that we always try to understand as well as to feel. तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि भाव जो है उस भाव के साथ साथ उसको समझना, वो क्या है उसको समझना। So yes, you can, as far as I can see, the main significance is that in Jambudvipa there's reflection, there's self-awareness. तो ये महत्वपूर्ण ऐसा संबंध मुझे यहाँ पर लगता है, विशेषता यहाँ पर लगती है वो जम्बूद्वीप में हम सोच सकते हैं, हम स्वयं के प्रति जागरूक होते हैं। So use that self-awareness. तो ये स्व जागृति है, उसका इस्तेमाल करें। Use that reflective power. वो जो चिंतनात्मक ऊर्जा है, शक्ति है, उसका इस्तेमाल करें। Otherwise, your practice is just अंधश्रद्धा। नहीं तो आपका जो भी अभ्यास है वो केवल अंधश्रद्धा बनेगी। Andhashraddha, Akasheshwari, means blind faith. I thought it meant egg faith, but that's another sort of under. That's a joke, apparently. That's a joke. Yes, so blind faith, that's what it is. It's activity without reflection. तो ये अंधश्रद्धा है, ये ऐसी कृतियाँ है जिसमें कोई चिंतन नहीं है। And there's so much of that in religion. और कई सारी बातें धर्म में इस तरह की है। And we must make sure that's not so with our Triratna. और हमने इस बात की निश्चित बरतनी चाहिए कि वही बात हमारे त्रिरत्न के साथ न हो। But yes, there is significance here. लेकिन यहाँ पर वो महत्व है। And it's mainly that in our world there's the power of reflection, the power of self-awareness. तो वो महत्व यही है कि हमारे इस जगत में चिंतन की शक्ति है, स्व जागृति की शक्ति है। Okay, so finally I've got a simplified a cross-section. तो इसका ही वो सादा ऐसा रूप है। And this is simply to illustrate the way in which the schema covers the three lokas. तो इसमें तीन लोग किस प्रकार से दिखते हैं या किस प्रकार से पाए जाते हैं, इसको मैंने सीधे ढंग से रखा है। You can't see properly, but from here downwards, this is all karmaloka. तो वो लाल जो है अंतिम लाल रेखा से नीचे जो है वो कामलोक है। Then you've got rupaloka. फिर उसके बीच में रूपलोक है। Then you've got arupaloka. और उसके ऊपर अरूपलोक है। And well, in fact,
Arupaloka goes way up. अरूप लोक और भी बहुत ऊंचा जाता है And it's much wider. There are many more people in Arupaloka, apparently. Yeah? और जितने रूप लोक में लोग होते हैं उससे कहीं विस्तृत रूप से अरूप लोक में लोग होते हैं, बड़ा होता है वो। So clearly the animals and the humans live on the continents. तो जो भी प्राणी या मनुष्य है वो उस द्वीप में रहते हैं। And according to this mythological system, the Asuras live around the base of Mount Meru, above the golden base. और इस मिथोलॉजी के अनुसार जो सुनहरा तल है उसके वहाँ पर असुर लोग रहते हैं। And then the pretas, and then the hell beings. और उसके नीचे फिर प्रेत लोग हैं और नरक लोग हैं। And then you get the god realms. और ऊपर जो है वो देवलोक है। They're from roughly the middle of Mount Meru right up to just above. तो पर्वत मेरू के आधे हिस्से के ऊपर वो होते हैं, ऊपर भी और वो होते हैं। These are the god realms of Kamaloka. लेकिन यहाँ के जो देवलोक है वो कामलोक के देवलोक हैं। Because there are 3 different kinds of gods according to Buddhist mythology. तो बौद्ध गुणशास्त्र के अनुसार ये जो 3 अलग-अलग प्रकार के देवलोक होते हैं। There's the gods who inhabit the realm of form, the sensuous world. The sensuous world. तो ऐसे लोग देवलोक भी दिखाए जाते हैं जो काम लोक के या इंद्रिय जन्य लोक के अवस्था में रहते हैं। You could perhaps say that it's a bit like extremely rich people. तो शायद आप इस तरह से सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो बहुत ही श्रीमंत ऐसे लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं उनके जैसे। Or people living in this world but having a really just wonderful life. तो इसी जगत